Sure. So that's great. I'm sure we will be in another few minutes hitting 10,000 mark, and that'll be historic for me. I don't think that I have taken any session for 10,000 people. So whenever you say we are good to go, I'll start. Bridge, Ashish, Indraneil. Sure, sir. Yeah, Sure. maybe we'll wait for another two Yes, minutes. boss. Yeah, 2 minutes, I 10:05 think. we can start. Yeah. Yeah, Okay. 10 5. Meanwhile, while we start the session in another 2 minutes, wishing all of you a very, very happy Gandhi Jayanti. And he was a great example along with many other people who have fought freedom for India. हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में बहुत सारे बहुत अच्छे freedom fighters थे. And for us in PNB MetLife, it's more delightful because most of these freedom fighters had account with the Punjab National Bank. Right. So we should all be feeling very proud that हमारा जो parent company है Punjab National Bank, and Punjab National Bank was the bank for many of the freedom fighters like Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh. Right. So all of them had their bank account with Punjab National Bank. In fact, when I went to Punjab National Bank head office, Punjab National Bank की head office में जब मैं गया था, I saw a picture that the car loan of Lal Bahadur Shastri, he had a Fiat car which was also being given by Punjab National Bank, and they had a photo of the car, and I've clicked the picture on my mobile. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कार भी हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया था, कार लोन. So we should all feel proud that we are a part of this company called as PNB MetLife. We have 8,500 odd participants in this event. Maybe we can start and people can join in between. Yeah. Okay. Okay. So thank you very much, all of you, for joining. And I want to share with all of you, all the employees and all the valued partners, that today you had a choice, right? आपके पास एक choice था. Today is a holiday. You could have gone to a temple or a church or a mosque in the morning, or you could have woken up late in the morning. You could have gone out with your family. आपके पास choice था. But you did not choose to do anything other than attending this session at 10 o'clock in the morning. And I want to share with you a very, very interesting line which I have learned from the person who is most important today, which is Mahatma Gandhi, that he said that your future depends upon what you do today. Okay, I will repeat what he said. A beautiful quote which he has written, which he said is, your future depends upon what you do today. आपकी फ्यूचर डिपेंड करेंगे आप आज जो कर रहे हो उसमें. Right? And you all have decided to attend this session. You all have decided to master your sales skills. And believe me, that is going to define your future. आप कैसे फील्ड में जाओगे, आप कैसे प्रोडक्ट को पिच करेंगे, all that will definitely depend upon what you learn today. And उसके लिए first step you have taken, which is attending this program today. I will not take more than maybe 30-40 minutes. 40 minutes भी नहीं है. I will try to finish this off in 30 minutes, so that एक crux हम सीखेंगे about how to pitch a product, etc. So my request to all of you is that one is to listen to me fully. Right? Maybe if you can put earphones so that there are no disturbance. And at the same time, if you have a pen and a paper, अगर आपके पास एक कोई pen paper आप ले सकते हैं, you should take that too, so that you will be able to note down some of the points which I will be sharing. After this presentation, our team members will be sending you the entire deck. The presentation को आपको PDF के रूप में मिलेगा आपको. Today by in the next 1 hour, once the program is over, within next 1 hour, whatever presentation I am showing, जो presentation मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको मिलेगा. But साथ में it is always better to take notes so that it registers in your mind, right? So when you listen to me, only your ear and brain is working. When you write down what I am saying, your hands, your brain, everything is working, right? So automatically you will absorb most of the things. Now,
We are having this session for the next few days of time. So my request to all of you is that today is 10 o'clock in the morning. From tomorrow, it is at 5:30 to 6:30. Right, कल से, except for Sunday, next 7 days we will be doing the session. हर दिन में 5:30 से 6:30 है कल से. So tomorrow also you find your time 5:30 to 6:30, and believe me, 7 days के बाद you will be a very, very different person. Like what I told yesterday in our meetings, that today's topic is about gain, right? Gain is our retirement solution, retirement plan. And we said that gain 10 पे क्यों बेचना चाहिए? Why should you sell in PNB channel, in agency channel, in PSF channel? Why should you sell that? Because you get higher product credits. I'm talking about your benefit. I'm not talking about customer benefit. I'm going to talk about customer benefit in the next few minutes of time. So मैं सिर्फ आपके बेनिफिट के बारे में अभी ये स्लाइड में बता रहा हूं कि आपको 10 पीपीटी बेचने से, गेन 10 पीपीटी बेचने से आपको हायर क्रेडिट मिल रहे हैं. राइट, यू गेटिंग मोर क्रेडिट मिलेगा तो आप भी जानते हैं कि आपके इंसेंटिव्स बढ़ेगा, टारगेट जल्दी खत्म हो जाएगा. राइट, आपको जो कॉन्टेस्ट है वो सब जीत पाएंगे. ऑल ऑफ दैट इज गुड फॉर यू, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी सेड दैट अक्टूबर इज अ मंथ वी विल कॉल इट एज गेन मंथ. राइट, हमको भी गेन चाहिए. राइट, प्रमोशन गेन करना है, इंसेंटिव गेन करना चाहिए, जो ट्रिप्स है वो गेन करना चाहिए. फॉर दैट वी हैव टू टॉक गेन, सेल गेन एंड गेन. राइट, ऑल दोस बेनिफिट्स you gain it. Right, so we have to keep talking about gain, selling gain, and that will surely gain you many things. Now, today's topic, next 30 minutes of discussion, is going to be on gain. Right, gain, like what I said, is our retirement solution. I'll try to speak slowly. I'll speak in both English and Hindi so that across the country, people from Kerala to Kashmir can understand. And I will go slowly, one by one points in both languages. Now you take any profession. There are many pictures on this slide. Any profession, whether you are a painter, right, whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are a businessman, right, you take any profession, one day everyone will retire. आप कोई भी profession choose करो कि one day everyone will retire. The reason why I told you this is because there is a belief that if you're a businessman, you will not retire. ऐसे सोचते कि आप businessman है तो वो retire नहीं होते. Businessman भी retire होते हैं, active work life से retire होते हैं. And in the next few minutes, we will talk about what is the meaning of retirement. Retirement का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में, so that you will understand what to speak to the customer. So this slide says that everyone one day will retire. Okay, if it is a private company or a government company, if you're a salaried person, you have a clearly defined age that 60 पे आप retire होगा. Right, आप अगर professional हो, आप doctor हो, शायद आप decide नहीं कर सकते कि 60 करना है कि 65 करना है. But I will tell you what is the meaning of retirement in the next 1 or 2 minutes time. But ये याद रखना, one day everyone will retire. Whatever profession you are in, you are a businessman, not a businessman, active work life से आप retire होगा. Okay, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये, because many of your customers, right, if you're taking PNB channel, many of the customers have current account, they come to your bank, right, they are not a salaried person, right, they're a businessman. जब आप रिटायरमेंट की बात करोगे वो बोलेगा कि मैं कभी रिटायर नहीं होने वाला हूँ. राइट, आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर रिटायरमेंट सबका होगा, आप एक्टिव वर्क लाइफ से रिटायरमेंट करेंगे. एंड रिटायरमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी. राइट, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट. Now the question is, what is retirement? हमारे माइंड में ये फिक्स है कि रिटायरमेंट इज एन एज. 60 हो गया तो रिटायर हो गया, 65 हो गया तो रिटायर हो गया. Some people say that I want to retire early in my life, which is 55, I will retire. Right? So people think that retirement means at some age I stop working. That is not retirement. You have to explain and understand. First, and I explain to the customer that retirement is a lifestyle. Right? It can start at the age of 50. It can start at the age of 55. It can start at the age of 60. It can start at the age of 65. Retirement is a lifestyle where you don't need to be really worried about your active income. Okay, मैं explain कर रहा हूँ वापस. रिटायरमेंट एक एज में आपके इनकम स्टॉप हो रहे और नेक्स्ट डे से इनकम नहीं आ रहा है, वो नहीं है रिटायरमेंट. राइट, हमारे बिलीफ वो है कि मेरा 60 के बाद मुझे कोई इनकम नहीं आने वाला है, उसका मतलब है मेरा काम से रिटायरमेंट हो गया.
That is not retirement. That means that your active income is stopped. But what is retirement? Retirement means you have to continue a lifestyle without really bothering about your active income. आपके active income काम करके जो income आने वाले हैं वो income से bother नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद आपको एक अच्छा lifestyle चाहिए, उसको बोलते हैं retirement. I hope you are understanding what I'm saying now. So that is called as retirement. मेरा एक्टिव इनकम, राइट, जॉब से जो इनकम आ रहे या बिजनेस से जो इनकम आ रहे वो इनकम के बिना भी मैं अच्छा एक लाइफस्टाइल जी पाऊंगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. I hope this you are understanding. This is not that PNB MetLife retirement age is 60. So you are retired at 60. Of course, your job is over at 60. But it's not retirement. What is retirement? Retirement is a lifestyle. आप जो lifestyle जीने वाला है वो आप 50 में भी कर सकते हैं. पीएनबी मेटलाइफ में काम करते हुए, एज ए वैल्यूड पार्टनर काम करते हुए, आप एज ए बिजनेसमैन आप काम करते हुए, राइट, या एज ए डॉक्टर आप काम करते हुए भी यू कैन स्टार्ट दिस रिटायरमेंट. व्हाट इज रिटायरमेंट? एक लाइफस्टाइल, मेरा अच्छा एक लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके लिए मुझे बॉदर नहीं करना पड़ रहा कि आज मैं कितना इनकम कमा रहा हूं. दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. नाउ पीपल मिस्टेक इट एज एज. रिटायरमेंट मीन्स 60 और 65 में मैं रिटायर होगा, राइट. दैट इज नॉट रिटायर्ड, दैट इज टायर्ड. ये कस्टमर को बोलने के लिए बहुत अच्छे सर आप बोलना है सर, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप 60 पे आप काम बंद कर दिया, 65 पे काम बंद कर दिया. दैट इज कॉल्ड एज रिटायर्ड नहीं है, वो टायर्ड है, आप थक गया है. आप कहां से देन लाइफस्टाइल संभाल पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे. So retirement simple मतलब ये है कि the meaning of retirement is you enjoying a lifestyle without bothering about your active income. आपके एक्टिव काम से, एज ए डॉक्टर मैं पेशेंट को नहीं मिलूंगा तो मुझे कोई इनकम नहीं आएगा, उसके बॉदरेशन नहीं हो, एंड आप आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से संभाल पा रहे, उसका मतलब है आप रिटायरमेंट में हो अभी, राइट. रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल से मेरा काम बंद करूंगा या मैं एज एन एंटरप्रेन्योर आई विल स्टॉप माय बिजनेस एंड रिटायर फ्रॉम द बिजनेस. दैट इज जस्ट दैट यू आर स्टॉपिंग योर एक्टिव वर्क लाइफ. दैट्स इट. ओके. टिपिकली पीपल थिंक दैट मैं रिटायरमेंट लाइफ शुरू करूंगा 60 पे, 65 पे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन्ड हियर. दैट इज अ टायर्ड लाइफ. दैट इज नॉट रिटायर्ड लाइफ. That's a tired life. So retirement means you having regular income coming from your investment and you are not really bothered about how much income is coming from a business or salary. That's what's called as retirement. So this ये concept में आपको समझाना चाहते थे because then you will be able to explain to people. Otherwise, people will say that I am a businessman, I am not going to retire. Why do I need a retirement plan? Right? मुझे क्यों चाहिए gain की product? Gain का product सबको चाहिए because retirement is a lifestyle. Right, उससे इनकम आते रहेंगे. So you don't need to be really worried about your active income coming from a business. Now, there are two types of life after retirement. I'm not talking about 60, 65. I'm talking about retirement, which is a lifestyle where I don't need to be bothered about my active income. So life after retirement, there are two types of life. One is very ordinary life. And this is what you see commonly across, everywhere. You go to a park for a walking, you will see very dull faces. आप दिखेगा बहुत दुखी वाला faces, right? Old people today they are entertained with mobile phone, etc. But you will see them tired and you will see them walking. They are struggling. They want to just live their next 20, 25 or 10 years of life. That is very ordinary way of living your retirement life. Another way of living your retirement life is a grand life. ग्रैंड लाइफ मतलब बोलते ना कि लाइफ इज ग्रैंड, एकदम ग्रैंड तरीके से फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जीना, उसको बोलते हैं ग्रैंड लाइफ, राइट. एंड इट इज नॉट दैट यू कैन ओनली स्टार्ट दिस एट 60 or 65, right, and you can only start this after you stopping your work. No, you can start it at the age of 50 also. You can start it at the age of 55 also. You can start at the age of 60 also. Right, you don't need to retire from your business. You don't need to stop going to your business or office to say that now I am going to have a grand retirement life. No, आप ये retirement life आप काम करते हुए भी शुरू कर सकते हैं. ओके, तो रिटायरमेंट का सिंपल मतलब है मेरा एक्टिव इनकम का बॉदरेशन के बिना मैं जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकता हूं, तो उसका मतलब है रिटायरमेंट.
वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक है ऑर्डिनरी तरीके से, जिधर ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास, एंड देन यू आर डूइंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। दूसरा ग्रैंड लाइफ, a grand life, right? Everybody likes this right hand side of the slide, right? आप खुद ही सोचिए आप कौन सा पसंद करेंगे खुद के लिए, right? You would want to have the right hand side of your life, enjoying, partying, traveling with friends, traveling with family, and that's what the life which all of us want. Now look at the picture itself, right? कितना family happy है, right? कितना enjoy कर रहे हैं, and everyone wishes to have a grand life. And ये grand life के लिए क्या चाहिए? Grand assured income चाहिए, राइट? ग्रैंड एश्योर्ड इनकम चाहिए, राइट? तभी ग्रैंड लाइफ होगा, बोलने से नहीं होगा ग्रैंड लाइफ। बट ग्रैंड लाइफ के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, राइट? एंड व्हाट इज ग्रैंड लाइफ का ग्रैंड एश्योर्ड इनकम? ग्रैंड मीन्स बिग, बड़ा पैसा चाहिए, राइट? बहुत पैसा चाहिए। एंड एश्योर्ड इनकम का मतलब क्या होता है? गारंटीड इनकम फॉर लाइफ, राइट? सो ग्रैंड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपको चाहिए तो आपके पास ग्रैंड एश्योर्ड इनकम चाहिए। ग्रैंड होना चाहिए विच इज बिग, assured होना चाहिए which is guaranteed, and income for life आना चाहिए। तब मैं बोल सकता हूं कि मेरा ग्रैंड लाइफ होगा रिटायरमेंट के बाद। यही है हमारे प्रोडक्ट का नाम भी, राइट? आवर प्रोडक्ट्स नेम इज आल्सो द सेम थिंग, ग्रैंड assured income. Grand means big, assured means guaranteed, income means income for life. मेरा throughout retirement life, if I have to live a great life, what is that money which I need to have is what is called as grant assured income. I hope you are clear till now. So retirement is not an age. Retirement is a lifestyle which you enjoy living without having much of a botheration about your active income. That's what is called as retirement life. दो तरीके के रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। एक है रिटायरमेंट ऑर्डिनरी वे, दूसरा बहुत पैसा वाला, बहुत ग्रैंड वाला, राइट? रिटायरमेंट, उसके लिए आपको ग्रैंड एश्योर्ड इनकम, गारंटीड बिग income for life चाहिए। Now, typically in India, people think, and this is the main slide, अभी तक जो build-up था, and I told you yesterday that 2 slides में आपको समझाऊंगा या 3 slides में समझाऊंगा how can you easily sell this product called as gain, and that slides are coming now. पहले तो हमने concept समझ लिया what is retirement, and now those slides are coming now. Now in India, typically people think that retirement के लिए I will buy some property and I will give it for rent. And rent आते रहेंगे and that is my retirement life. Right? मुझे अच्छा rent आ रहा है and then मेरा retirement life बहुत बढ़िया है. Right? You think about it. In India, everybody thinks that I will invest in a house, I will buy 2 property, 3 property. Whatever rent I am going to get is what my income of pension is. मेरा जिंदगी एकदम set हो गया. This is what people think. राइट? मैंने तो ऑलरेडी घर लिया है, 2-3 घर लिया, उसमें से रेंट मिलेगा, वो रेंट से मेरा रिटायरमेंट होगा, मेरी जिंदगी सेट है। दिस इज व्हाट पीपल थिंक। That is one part of it. You can see in blue color what is going to come is on the left hand side of it is one part of it. जो commonly in India people think about this as an option for retirement. जो grand retirement life के लिए लोग ये सोचते हैं। Now right hand side में जो आपको दिखेगा ग्रीन कलर में जो लिखा है वो है हमारे गेन प्रोडक्ट में अगर आप बेचोगे तो आपको क्या फायदा है when compared to this option. राइट? पैसा तो चाहिए, राइट? फ्री में तो आपको रिटायरमेंट लाइफ जी नहीं सकता, यू नीड मनी। तो एक ऑप्शन, ट्रेडिशनल ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट इन ए हाउस। नाउ लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट एंड अंडरस्टैंड कि विच वन इज बेटर, कौन से बेटर है। कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको ग्रैंड इनकम चाहिए। एक ऑप्शन है यू कैन इन्वेस्ट इन ए हाउस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। द फर्स्ट वन line which you hear on the screen is saying that if somebody is paying an EMI of, sorry, it is not written 1 lakh per month, right? So Ashish, you correct it. EMI of 1 lakh per month, right? Sorry, इधर लिखा है EMI of 1 lakh rupee per month for 10 years. हर मंथ में 1 लाख रुपी घर लिया है, राइट? घर ले रहे वो, अभी घर नहीं लिया। इसमें मैंने आई हैव नॉट इवन काउंटेड द एडवांस पेमेंट और डाउन पेमेंट एंड ऑल दैट। For your understanding, basic understanding, we are putting some mathematics so that you will understand the difference between these two, right? So ये बहुत simple calculation है. A 5th standard child will also understand this slide. If once I show this, even my grandmother will understand. इतना simple मैं आपको बताने वाला हूँ ये. So 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपी per month EMI 10 years के लिए भर रहे कस्टमर, and assume that होम लोन की इंटरेस्ट रेट 9% है।
9% काफी कम लिखा है मैंने, राइट? अभी इंडिया में 8.75, 9, कुछ बैंक्स 9.5% में होम लोन. So if somebody is paying 1 lakh rupee per month, EMI भर रहे 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh per month for 10 years if he pays at 9% home loan interest rate, आपको पता है कि कितना बड़ा घर वो ले सकते हैं? मैं आपको बताता हूं. अगर 1 लाख रुपए आप पे करोगे, 9% इंटरेस्ट रेट से एक होम लोन आपने लिया, आपको 10 साल के बाद एक प्रॉपर्टी मिल सकता है, वो 80 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी मिलेगा. बाकी कहां गया पैसा? इंटरेस्ट में चला गया, राइट? आपने कितना पे किया? 1 लाख, 1 लाख, 12 लाख एक साल पे किया. 10 ईयर्स आपने पे किया, 12 लाख इंटू 10 ईयर्स, 1 करोड़ 12 लाख 20 लाख रुपए आपने पे किया. यू हैव पेड 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपीस EMI कंप्लीटली, बट उसमें से 40 लाख रुपया आपको होम लोन की इंटरेस्ट में चले गया. एंड बैलेंस द हाउस विच यू हैव गॉट इज ऑफ ओनली 80 लाख रुपीस. आई होप अभी तक आपको समझ गया ये. 1 लाख रुपए का मुझे EMI भरना है, 10 साल मैंने EMI भर दिया पर मंथ. 9% अगर होम लोन की इंटरेस्ट रेट है तो मेरा घर का वैल्यू होगा सिर्फ 80 लाख रुपीस. 80 लाख रुपीस. ओके, अभी लोग बोलते कि ये घर मैं दे दूंगा रेंट पे, आई विल गिव दिस हाउस फॉर रेंट, एंड ये रेंट से मेरा रिटायरमेंट लाइफ में जीऊंगा. दिस इज व्हाट कॉमनली इन इंडिया पीपल थिंक अबाउट इट, एंड आई नो दैट सम ऑफ यू आल्सो हैव प्लान्ड योर रिटायरमेंट लाइक दैट. नाउ इन इंडिया the best rent which you get is approximately 3% of the value of the house. 3% of the value of the house. Right? आप खुद ही सोचो, इन केस अगर आप कोई घर में रेंट पे रह रहे तो आपको पता होगा नो आपका घर का वैल्यू का ऑलमोस्ट 3%, कुछ कुछ जगह पे 2.5% भी है, राइट? कुछ जगह पे उतना भी नहीं है. केरला में मेरा जो एरिया है विच इज गांव है, वो उधर मेरे फादर के एक घर है, 40 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है. 40 लाख रुपए का प्रॉपर्टी में ही इज गेटिंग ओनली 9,000 रुपीज रेंट इन अ मंथ. 9,000 आप रुपीज आप सोचो इन 12 महीने, इट्स अबाउट 1,08,000 रुपीज. 1,08,000 रुपीज ऑफ 40 lakh rupees is only less than 2%. Yeah, 2.5%, right? So 2.5% मिलते हैं कुछ कुछ जगह पे 3% मिलते हैं. So you can now calculate ना, आप कौन सी घर में रह रहे हो, रेंट पे दे रखा है या रह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि approximately 3% per annum is the rent which you will get if you are giving your house for rent. So 80 लाख रुपीस का अगर घर आपने बना दिया, EMI भर के 1 लाख EMI 10 साल भरा, 12 महीने, यू आर गेटिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ 80 लाख रुपीस. वो फ्लैट या घर आपने रेंट पे दिया तो आपको पर ईयर रेंट मिलेगा 2,40,000 रुपीज एट 3%. अप्रोक्सीमेट इज 3%. मैं अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ, द सेम थिंग, इट इज 3%. इट इज नॉट दैट गुड़गांव में ज्यादा रेंट मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. जितना आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट है उसके करीब 3% आपकी रेंट है, राइट? बॉम्बे में भी सेम है, जितना प्रॉपर्टी का कॉस्ट है उसका 3% आपको रेंट अप्रोक्सीमेटली मिलेगा. पूना में वो 2.5% आपको मिलेगा, right? In some markets it is 2.5%, some market is 3%. So 2,40,000 means every month you are getting rent of 20,000 rupees. 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी से आपको 20,000 रुपए का रेंट मिलने वाला है. और उसके लिए आपने क्या किया था? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 10 साल पे किया हर मंथ में. Now this rental is not also guaranteed. ये income is not guaranteed. It depends upon various factors, right? वो टेनेंट चले गया तो आपका रेंट रुक गया, राइट? टेनेंट कुछ पैसा नहीं दिया कुछ महीने के लिए, वो टेनेंट आपका रेंट रुक गया. अच्छा फैमिली नहीं मिला तो रेंट रुक गया. So there are many factors also for getting this 20,000 rupees also. Every month if you have to get this 20,000 rupees, there are many factors, right? Because tenants keep changing. Sometimes there is a period where you don't have a tenant. You will be asked by the broker to give some money. 1 month के रेंट ब्रोकर मांगते हैं, तो ये सब आपको संभालना पड़ेगा. I hope this side is understood by you. अभी तक मैंने जो बोला, India's conventional way of retirement income is by investing in a house. If you invest 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh in a home loan for 10 years of time, 80 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी बनेगा. 80 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी बनेगा तो 2,40,000 रुपीस पर ईयर में आपको रेंट में मिलेगा. एंड उसका मतलब है सिंपल 20,000 रुपीज पर मंथ आपको रेंट मिल रहा है. ये है एक तरीका रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए. दूसरा तरीका है कि हमारा PNB मेटलाइफ का गेन में ये सेम अगर इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो क्या होगा, देखते हैं.
Say EMI के लिए 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh for per month. Here also 1 lakh per month for the next 10 years in gain. Same comparison कर रहे हैं. Same comparison. 1 lakh per month for 10 years every month. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. क्या होगा? गेन का जो वैल्यू बनेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए. आपने 1 लाख पे कर लिया, 10 साल भर लिया. इंस्टेड ऑफ 80,000 रुपीज की प्रॉपर्टी, 80 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी की जगह पे यू हैव गॉट ए प्रॉपर्टी नाउ ऑफ 1 करोड़ 20 लाख रुपीज, विच इज द गेन का जो कॉर्पस आपने बनाया 1.2 करोड़ रुपीज. फर्क तो है. अभी कितना पेंशन मिलेगा? इधर 2,40,000 रुपीज रेंट मिल रहा है ना, तो इधर कितना मिलना चाहिए? डबल मिलेगा, सेम मिलेगा? आप खुद ही सोचो. एंड आई वांट टू गिव यू द आंसर व्हिच विल शॉक यू. आपको शॉक आएगा, सरप्राइज होगा आप. एंड योर कस्टमर्स विल बी इवन सरप्राइज, अनबिलीवेबल उनको लगेगा दैट सेम स्टोरी. 1 लाख पेमेंट फॉर पर मंथ for 12 years, 10 years. Here also 1 lakh. Here the pension which the customer is going to get is 9,52,380 rupees per year. मंथली अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना पैसा? करीब 80,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगा. प्रॉपर्टी अच्छा है या रिटायरमेंट इनकम थ्रू गेन अच्छा है, आप खुद ही देख सकते हैं. इसमें कोई ब्रोकर का जरूरत नहीं है. देयर इज नो ब्रोकर रिक्वायर्ड, राइट? कि रेंट के लिए, चढ़ाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है. नथिंग रिक्वायर्ड. गारंटीड है ये रेंट, है ना. इधर तो कोई गारंटी नहीं है, आगे जाके रेंट कम हो गया तो कम हो गया, right? But look at it, 80,000 rupees for the same value of money, same value. 1 लाख 1 लाख 1 लाख भरा, 1 लाख 1 लाख 10 साल भरा हर मंथ में. इधर 80 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी बना, इधर 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना, इधर रेंट मिल रहे 2,40,000 पर ईयर, इधर मिल रहे 9.52 लाख रुपीस पर ईयर, इधर 20,000 रुपीस पर मंथ, इधर 79,365. एंड इधर रेंटल इनकम इज नॉट गारंटीड ऑलवेज. Here this is income is guaranteed for life. अभी टिपिकल बिजनेसमैन की माइंड में आपके चल रहे होगा कि प्रॉपर्टी तो ग्रो करेगा. आई नो इट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी. बट ये स्लाइड आपको समझ गया क्या? वेरी सिंपल स्लाइड. 80,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर मंथ इनकम कस्टमर को जिंदगी भर, राइट? घर टूट सकता है, घर खराब हो सकता है, घर का वैल्यू आफ्टर 20 साल 25 साल कम हो सकता है, राइट? टूट गया, वो मार्केट अच्छा नहीं हो गया, कुछ तो रीजन की वजह से हो सकता है. बट ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन यू गारंटीड assured income for life, it is guaranteed. स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, बॉन्ड मार्केट नीचे जाए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 0% भी इंटरेस्ट करे, there is no problem for a customer because it is guaranteed for life. I hope this slide is understood by all of you. Like what I told, it's a very, very, very simple slide. ये एक पेपर अगर आपने समझ लिया, आप आसानी से गेन बेच सकते हैं, राइट? बट पहले कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि रिटायरमेंट लाइफ की मतलब होता है लाइफस्टाइल अच्छा से जीना विदाउट रियली बॉदरिंग अबाउट एक्टिव इनकम, राइट? ये आप बनाना जरूरी है. इधर आप घर खरीद लो और वो रेंट पे दे दो एंड रिटायरमेंट इनकम कमाओ, बट नुकसान इधर है. अगर आप मेरे साथ आओगे गेन के थ्रू, यू विल गेट दिस. आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू नाउ द माइंड दैट मेरा घर तो अप्रिशिएट करेंगे, 80 लाख रुपीस का घर तो डबल हो जाएगा कुछ साल के अंदर में, राइट? बट गेन का तो 1.2 करोड़ तो 1.2 करोड़ ही रहेगा. लेट अस सी द कैलकुलेशन. ये थोड़ा बिजी स्लाइड है, थोड़ा सा ज्यादा डेटा है, बट ये बहुत सिंपल है. हमने कैलकुलेट किया है कि प्रॉपर्टी का प्राइस अगर 6% से बढ़ रहे हैं हर साल में, अगर 6% से बढ़ रहे हैं, 12 साल के अंदर में प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो जाएगा, राइट? कुछ मार्केट में लोग बोलेगा कि प्रॉपर्टी का प्राइस तो 3 साल में भी डबल होगा. गुड़गांव में तो डबल हो गया, मैं सुन रहा हूं, राइट? अभी डबल हो गया, आगे 3 साल में डबल होगा क्या? वी नेवर नो, वी डोंट नो. ये सब लोग बोलते हैं, बट बिलीव मी, मेरा प्रॉपर्टी कोई डबल नहीं हुआ. आई हैव इन्वेस्टेड इन पूना अबाउट सम 7-8 years बिफोर. वो अभी तक तो 10% 20% भी नहीं बढ़ा है. एंड आई हैव बॉट इन वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटी. पीपल फ्रॉम पूना नोज वेयर आई हैव बॉट. इट इज इन वन ऑफ द बेस्ट रोड्स. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स. सब बढ़िया है. But because of plenty of flats available in Pune in majority of the markets,
अप्रिसिएशन इज नॉट वेरी मच. मैं पुनः का अप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूं. इवन इफ इट इज 6% अप्रिसिएशन, आपकी 80 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी अगले 12 साल के अंदर में वो 1.6 करोड़ हो जाएगा. पर आप देखो रेंट अगर 3% मिल रहे हैं हर साल में, रेंट भी बढ़ रहे हैं ना. आप सोच रहे हो 20,000 की रेंट तो बढ़ेगा ना. हाँ बढ़ रहे हैं ना, हम दिखा रहे बढ़ रहे. आप सोचो कि प्रॉपर्टी का वैल्यू आफ्टर 12 ईयर्स वो 1.6 करोड़ हो गया. अभी का नहीं है, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, राइट. 10 साल तक आपने पे कर लिया, प्रॉपर्टी मिल गया, तो उसके बाद 12 साल में आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बन गया 1.6 करोड़. आपको रेंट भी मिल रहे हैं हर साल में, थोड़ा बढ़ते आपके रेंट भी बढ़ते जा रहे हैं. आपके रेंट आप देखो 11वें साल में भी आपकी रेंट या 12वें साल में भी आपकी रेंट आ रहे हैं करीब 40,000 रुपया पर मंथ, नॉट 80,000 रुपीज पर मंथ. हमारा 80,000 अब 20 से मिल रहे हैं, राइट. ये 10वें साल से मिल रहे हैं. आप सोचो कि टोटल रेंट कितना मिल गया कस्टमर को 12 साल में, 40,80,000 रुपीज. कस्टमर ने अगर प्रॉपर्टी बेच दिया, इफ द कस्टमर सेल्स द प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स 80 लाख रुपीस कस्टमर का बाइंग कॉस्ट है, 1.6 करोड़ रुपीस कस्टमर ने बेच दिया, तो 80 लाख रुपीस कस्टमर को प्रॉफिट मिल गया. वो प्रॉफिट का क्या होगा, वो प्रॉफिट का कैपिटल गेन टैक्स भी जाएगा कस्टमर को, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स भी जाएगा. तो प्रॉपर्टी बेच के बहुत प्रॉफिट तो कमाने वाला नहीं है. बट कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रॉपर्टी बेचना ना, कॉन्सेप्ट इज रिटायरमेंट थ्रू रेंटल इनकम. उसमें प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा, डेथ में ही बेच रहे समझ लो. वेयर एज इफ यू टेक ए गेन प्रोडक्ट, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज मंथली इनकम आ रहे, एनुअल इनकम आ रहे 9.52 लाख रुपीज. मतलब 12 साल में इधर रेंट टोटल मिला है 40,48,000 रुपीज. 40,48,000 रुपीज रेंट मिला है 12 साल में. इधर देखो 12 साल में कितना रेंट मिला है कस्टमर को, 1,14,00,000 रुपए. कितना डिफरेंस है ये इनमें अगर इन्वेस्ट किया वर्सेस आपने इधर इन्वेस्ट किया, डिफरेंस 73.79 लाख रुपीस है 12 साल में, राइट. सो कस्टमर अगर बोलोगे कि मेरा प्रॉपर्टी का अप्रिशिएट होगा, कस्टमर को बोलना है कि सर अप्रिशिएट होने के बाद भी आपकी ये प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वलेंट टू आवर गेन प्रोडक्ट, राइट. एंड एट द सेम टाइम अगर कस्टमर को कुछ हुआ तो कस्टमर की फैमिली को ये 1.2 करोड़ रुपीस टैक्स फ्री भी डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, राइट. ये प्रॉपर्टी कस्टमर की फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा 1.2 करोड़. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड आल्सो, राइट. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड डू नॉट वरी, यू गो थ्रू द स्लाइड. हमने बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा है, वी हैव रिटन इट सिंपल इंग्लिश, यू विल अंडरस्टैंड दिस. एक नंबर याद रखना कि 12 साल में रेंट हर साल में बढ़ते दिखाने के बाद भी 12 साल में आपकी प्रॉपर्टी के थ्रू आपको 40,50,000 रुपए का रेंट मिला. इधर आपको कुछ नहीं करना है, गारंटीड आपको 1,14,00,000 रुपए का पेंशन मिल रहा है. डिफरेंस आपको ही दिख रहा है, 73,79,000 रुपीज, राइट. इधर प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स जाएगा, इधर अगर डेथ होगा तो आपको 1.2 करोड़ मिलेंगे. नाउ मूविंग ऑन, और क्या क्या तकलीफ है अगर प्रॉपर्टी ले लिया तो. नंबर 1, आपको हर साल में प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा. यू टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, एक्सेट्रा, right. And it depends upon place to place. It is about 1% you have to pay every year, not 1%, sorry, 0.1%. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको करीब 10-11 हजार रुपए का पेमेंट हर साल में पे करना पड़ेगा. प्रॉपर्टी टैक्स जाएगा. इधर तो सिर्फ जीएसटी जो प्रीमियम में आ रहा है वही जीएसटी है. वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस, राइट. प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा. हर 3 साल में आपको पेंटिंग करके दूसरे टेनेंट आएगा तो आपको करना पड़ेगा, राइट. योर टेनेंट विल से दैट मेरा हैंडल टूट गया, मेरा गीजर बंद हो गया, राइट. ये दरवाजा काम नहीं कर रहा है. यू हैव टू रिपेयर दैट एंड गिव इट टू द टेनेंट. इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, राइट. इधर नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, आपको गेन को पेंट नहीं करना है, राइट. आपको गेन प्रोडक्ट एक बार ले लिया, इट इज लाइक फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट. आपको कुछ नहीं करना, नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, राइट. आपको इधर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा. हमने वो सब काउंट नहीं किया है, स्टैम्प ड्यूटी करना पड़ेगा. इधर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है आपको. पुलिस वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा बहुत डिफिकल्ट है, राइट. I just shifted from Pune to Gurgaon about 1 month back, and believe me, for me as a tenant, it was so much of difficulty. Ashish and me were in police station for about half a day.
And we were really shouting at the owner, saying that why did you not inform us clearly as to what exactly you need and your society needs. It's a very, very tough process. रेंट एग्रीमेंट, अदर लिटिगेशन, अगर टेनेंट ने पेमेंट नहीं दिया तो क्या करेंगे आप, राइट? आपको लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, आपको लॉयर रखना पड़ेगा. इधर कुछ नहीं, कोई लॉयर नहीं है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है. यू बाय द प्रोडक्ट, नेक्स्ट डे इट विल गेट इश्यूड, and after that your guaranteed income is starting. Society maintenance charges, club charges, etc to be paid. Here there is no charges at all. So these are three beautiful slides how to pitch your gain versus investing in a house for your retirement income. I'll go a little fast and I'll explain to you. One question which can come from the customer is, annuity taxable hai kya? Of course annuity taxable hai. Right, in India pension is taxable, इसमें 1010D applicable नहीं है. However, and ये slide भी आप आपके हाथ में रखो, as per the new tax regime, अभी दो tax regime है, एक old tax regime and there is a new tax regime. As per the new tax regime, up to 7 lakh rupees of income in a year, you don't need to pay any tax. Right, because you know that these are the slabs. Up to 7 lakh rupees, 5%, 3 to 7 lakh rupees को 5% है. वो 5% देखो इधर कुछ डिडक्शन मिल रहा है अंडर 87A, उसके वजह से जीरो टैक्स है आपको 7 लाख रुपीस तक. सो इफ यू आर गेटिंग इनकम ऑफ 7 लाख रुपीस पर ईयर फ्रॉम गेन, यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स. दैट इज व्हाट द टैक्स स्लैब्स आर. राइट, सो आपको ये भी प्रिंट मिलेगा आपको समझाने के लिए कस्टमर को, सो दैट कस्टमर को ये क्लैरिटी होगा. अदरवाइज हमको ये सवाल पूछेगा कि एन्युटी टैक्सेबल है क्या, एंड इमीडिएटली हम बोलेगा टैक्सेबल है. And the customer will start counting that, oh, I am going to get इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, into 30% मुझे टैक्स बनेगा. नहीं सर, up to 7 lakh rupees of your income, you don't need to pay any tax. अगर आपको 7 लाख रुपीस आ रहे गेन प्रोडक्ट से, आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. And this is a very, very good knowledge which you have today, which you should be using with this printout of the deck. Now, this I am not getting into it. This is your ready reckoner. आपके लिए हमने रेडी रखना रखा है, बिकॉज आप में से कुछ लोग सोच रहे होगा कि 12 लाख का गेन का प्रीमियम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूं? तो 10 लाख का भी एग्जाम्पल है, 5 लाख का भी एग्जाम्पल है, 2 लाख का भी एग्जाम्पल है, 1 लाख का भी एग्जाम्पल है. ये 50 साल की कस्टमर का है, ये 60 ईयर की कस्टमर है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, बट दिस इज टू हेल्प यू. वी हैव क्रिएटेड दिस चार्ट सो दैट यू हैव ए रेडी रेकनर. आपके पास एक रेडी रेकनर आ गया, you will be able to do it. 1 लाख प्रीमियम में क्या मिलेगा, ये साल की प्रीमियम है. हमने एग्जाम्पल 12 लाख के किया क्योंकि वो घर से कंपेयर करना था ना, तो हमने होम लोन EMI 1 लाख पर मंथ कर लिया, इसलिए 1 लाख पर मंथ का हमने गेन का भी दिखाया. एंड दिस इज फॉर 60 years. एंड आप जानते हैं कि 60 years में पेंशन के रेट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि असम्पशन है कि थोड़ा कम साल के लिए आपको देना पड़ेगा. And whatever we were showing is all return of purchase price. मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए वापस आ गया कस्टमर के घर में in case if customer dies. Now this is the next option. Yeah, I'm not getting into the detail of the option, but the customer can tell you that मुझे ऐसे कोई ऑप्शन दे दो जिसपे मुझे बीच में पैसा मिल सकता है. So this option, if customer chooses 80 years या 25 years, whichever is higher, customer को ये half of his premium paid will be given to the customer. Okay, I am not going to do the training of this. Your training team members, your regional managers, everyone can train you on this. But this is a simple thing that this is the second option. If you tick that option, that life annuity with return of purchase price on death or survival, the rule is when you touch 80 years or 25 years, whichever is later, half of the annuity corpus will be given to you. ये एग्जाम्पल में आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रीमियम पे किया था, आपको 80th ईयर में 60 लाख रुपीस मिल गया, 60 लाख रुपीस मिल गया. पर इधर थोड़ा एन्युटी रेट कम है, राइट? ये 60 ईयर का एग्जाम्पल है. एंड की फीचर्स और 6 features are there. What is flexible PPT, return of premium, etc. I'm not getting into it. Easy issuance है, फटाफट issuance हो जाएगा. हमको 10 PPT ज्यादा बेचना चाहिए so that you will get a good corpus income for the customer. Annuity options, multiple options are mentioned here. This is like a training deck for you so that you can refer everything. But pitching मैंने आपको समझा दिया, right? Life annuity है, which means आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा. Life annuity with return of purchase price है, which is the example which we said.
Third example, the third one which I explained is 50% of the premium आपको 25th policy anniversary में या 80th year completion में आपको मिलेगा 50%, and बाकी 50% आपको death में मिलेगा. Okay, now this is the minimum age at entry. Minimum age at entry is 40 years, sorry, 40 years. So आप 40 के ऊपर जो भी customer है आप बेच सकते हैं. Minimum annual annuity is 12,000 rupees. Minimum premium is so much? I think 30,000. 30,000 rupees is the minimum premium for a 10 PPT. So these are boundary condition, and this is all what I wanted to share with you. And before we disconnect, I want to tell you that tomorrow at 5:30 I will be teaching you how can you sell Century Plan as a birthday fund. Right, Century Plan को एक birthday fund जैसे कैसे बेच सकता है. Right, एक आपकी फैमिली का, आपकी क्लोज किसी को एक गिफ्ट के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में सेंचुरी प्लान कैसे दे सकता है, is what is going to be the training session tomorrow. I hope today's session was interesting for you. Like what I said, I took only about 40 minutes, and हम ऐसे close करेंगे session so that you will have some knowledge getting into the mind, and then you will be able to sell it further. Right, we will send you this complete PPT in a PDF format in the next 1 hour to all of you. Please refer it, and please start meeting customers. Tomorrow is Navaratri. Let us start our first business on Navaratri and make this year very, very auspicious. Thank you very much, and good luck to all of you.